Morning, guys. चलो good morning everyone. ठीक है, तो लेट्स, आज क्या था? आज नेपाल लिखना था ना शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, देन वी हैव टू राइट नेपाल, आई बिलीव। नेपाल अपने को लिखना था। ओके, वन मोमेंट। कल एक मैप बनाया था, ठीक है, काला पानी ये सब लिखा था, फाइन। तो उस मैप का नीचे लिखा दिया था क्या मैंने? वो लिखाया था कि नहीं लिखाया था, वो थोड़ा मुझे बता दीजिए, मैं दिमाग से ड्रॉप हो गया है, ताकि हम आगे का पढ़ पाए। वो वाला लिखाया था कि नहीं लिखाया था, वो मेरे दिमाग से ड्रॉप हो गया था। तो लिख दिया था राइट वो? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, कोमल कह रही है नहीं लिखाए थे। तो हमने जो मैप बनवाया था उसके बाद कुछ लिखवाया ही नहीं था। इज इट लाइक दैट? जो काला पानी वाला जो काली रिवर का इशू था, वो हमने नहीं लिखवाया। यस और नो? बिकॉज सम पीपल आर सेइंग यस, सम पीपल आर सेइंग नो, so there is this confusion. अच्छा, सगोली एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब समझ गया मैं, अब मेरे को क्या लिखाना है वो मैं मतलब बता रहा हूँ। अब आ गया मेरे को आइडिया। ठीक है, तो बस एक मिनट। ओके, तो आ, लिखिए, लिखिए कि नीचे लिखिए, आ,
हेडिंग लिख दीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया। ये हेडिंग लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया। पुट अप दिस हेडिंग। इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल, नेपाल shares a deep rooted historical and cultural ties, deep rooted historical and cultural ties. Cultural ties. Full stop. Perhaps these two countries are the most closely interdependent countries based on people to people contacts and kinship. People to people contacts of kinship. KINSHIP. Full stop. C. Rajamohan said for India, Nepal is Punya Bhumi, Punya Bhumi, Punya Bhumi. Comma. Nepal's sacred geography is Nepal's sacred SAC, ठीक है, SACRED, sacred, ठीक है, geography is a living repository of the subcontinent's spiritual heritage. Full stop. For Nepal, India is nothing but Karma Bhumi. Okay. Bhumi. लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। पहला लिखिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसमें लिखिए नेपाल इज अ natural buffer state between India and China. Full stop. Moreover, even for internal security concerns, Nepal holds
special significance, to prevent terrorist groups, prevent terrorist group, prevent terrorist group like LET, Al Qaeda, etc. For for नहीं from लिखिए, from establishing launch pad in Nepal. Full stop. Moreover, the left-wing extremism threat in India, left-wing extremism threat in India, left-wing extremism threat in India, okay, India also requires cooperation of cooperation of Nepal, because they use Nepal as a transit. Nepal as a transit. नेक्स्ट लिखिए पॉलिटिकल पॉलिटिकल lately Nepal has adopted a democratic form of government. Nepal has adopted a democratic form of government. Form of government. Therefore, a democratic collaboration between the two countries, is of importance, particularly the expansionist policy of communist China. Full stop. Instability in Nepal open up a portal for China to interfere in the domestic affairs of Nepal, which will pose a danger to
to the security of India. सिक्योरिटी मत लिखो, पॉलिटिकल सेटअप ऑफ इंडिया लिखिए. Okay. Full stop. Moreover, in the changing world order, in the fast changing world order, the importance of a buffer state becomes more critical. Okay. उसके बाद लिखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. लिखिए many of the rivers that flows in India originates in Nepal. Originates in Nepal. Originates in Nepal. Therefore, to control the flood situation in the lower riparian area, such as in case of Bihar, requires active collaboration of Nepal. Similarly, development of many hydel power projects development requires active collaboration of Nepal. Okay. नेक्स्ट लिखिए डिफेंस. currently approximately 32,000 Nepalese Gorkhas are serving in the Indian Army.
Indian Army. नेक्स्ट लिखिए। लिखिए लिखिए रीजनल leadership and global ambition. Regional leadership and global ambition. Next point. इसके अंदर लिखिए regional leadership and global ambition. Global ambition. Regional leadership and global ambition. Nepal's stability and cooperation pivotal 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 for the success of India's neighborhood first policy. And neighborhood first policy and India's ambition of uniting the region for issues of global concerns. नेक्स्ट लिखिए, एक हेडिंग दीजिए, हो गया ये तो। सिग्निफिकेंस फॉर नेपाल हेडिंग दीजिए, नेपाल। पहला लिखिए इकोनॉमिक। उसमें इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। राकेश का आएगा, थोड़ा भेजिएगा। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल with more than $8 billion in trade, full stop, trade. Moreover, almost 40% of the FDI in Nepal came from India. नेक्स्ट लिखिए, और इसी में और लिखिए, इसी में लिख दीजिए। इकोनॉमिक लिखने तो वो भी लिख दीजिए, ठीक है, फुल स्टॉप।
also nearly 8 million Nepalese citizens live and work in India. Work in India. India. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए कनेक्टिविटी. दूसरा पॉइंट लिखिए कनेक्टिविटी. Nepal being a landlocked country, Nepal being a landlocked country doesn't have much of an option much of an option therefore their connectivity with the rest of the world is only through India, only through India. Only through India. Okay? Through India. Fine. India. Next लिखिए. डिफेंस लिखिए. डिफेंस. इंडिया for long assisting Nepal in training their armed forces and also helped in modernization. ठीक है. Modernization. Moreover, since 2011, both the countries conduct a joint military operation known as Surya Kiran. Next लिखिए. Energy cooperation. Energy needs लिखिए. Energy needs. Power exchange agreement was signed in 1971. Between the two countries to meet the energy requirement in the border areas.
areas. Moreover, India is actively involved in development of hydropower projects. For instance, लोअर अरुण रिवर का नाम है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्थ ₹1.33 billion. Okay. नेक्स्ट लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर. नेपाल्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिखिए उस पे. नेपाल्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज not conducive for the growth aspirations they hold. ठीक है. hold. Therefore, India's cooperation is important. Full stop. India is also involved in many infrastructure projects such as Tribhuvan Highway, त्रिभुवन हाईवे हो गया. फिर लिख दीजिए कोमा इंडस इंडस नहीं लिखिए, इंडियन सतलुज जल विद्युत निगम प्रोजेक्ट्स इन ईस्टर्न नेपाल railway project from Raxaul, Raxaul to Kathmandu, etc. Okay. अब एक और पॉइंट लिख दो, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी. उसमें लिखिए नेपाल इज one of the most fragile
fragile, and vulnerable countries prone to countries prone to natural disaster natural disaster and and growing dangers of climate change and growing dangers of climate change. Therefore therefore to deal with to deal with such issues, active engagement and cooperation of cooperation of India is essential for Nepal. ठीक है, चलो अब 1 मिनट रुको यार, हद हो गया आज तो। चलिए अब लिखिए, 1 मोमेंट, हेडिंग दे दीजिए कि उसमें लिख दीजिए irritants, IRRITANTS, irritants in Indo-Nepal relation. Indo-Nepal relation. Indo-Nepal relation. पहला लिखिए Nepal's fear. Nepal's fear. Despite geographical, historical, and cultural links, despite strong geographical, historical, and cultural links, Nepal remained quite apprehensive about India's role. India's role. ठीक है, being a small country, always feared India. Nepal feared India attempt to an intervention Nepal feared that India could attempt an intervention in Nepal for securing
intervention in Nepal for securing its interest vis-a-vis China. Full stop. Further, Nepal lived with fear of the Indian interference fear of India's interference in its internal affairs. The accession of SCCESSION. The accession of Sikkim, to India also acted as a source of disturbance for Nepal. ठीक है, एक मिनट. Okay, full stop. Shyam Saran, in his book How India Sees the World, mentions that with no other neighbor in India, is India so well bonded than with Nepal. Yet there is a widespread perception in Nepal that India does not respect. रुको, इधर लाओ, यहाँ रख दो. Does not respect the country's sovereignty and independence that it often intervenes in Nepal's domestic affairs and generally behaves like an overbearing big brother,
bring big brother. ठीक है, ओके। अब दूसरा लिखिए, लिखिए इंडियाज इनिशियल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन नेपाल। इनिशियल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन नेपाल। नेपाल, इनिशियल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन नेपाल। ठीक है, ड्यूरिंग इनिशियल years, India was not focused very much on these small neighbors. According to Dr. L.S. Baral, Dr. L.S. B-A-R-A-L, Baral, Baral, hyphen लगा के लिखिए, for some years after independence, India's foreign policy was principally determined by the existence of hostile Pakistan, Cold War, Chinese occupation of Tibet, and US-led alliance system, in the Third World. Full stop. लिखिए, Nepal felt dissatisfied with such Indian attitude full stop. Initially, it accepted the position because of lack of option. Later on, when China started emerging as a major power in world politics, Nepal felt no hesitation in developing relations with China. Okay? All right? Next लिखिए, the thesis of special relation with Nepal.
Prime Minister Nehru in one of his parliamentary speech in 1950 specifically highlighted, specifically and emphatically highlighted the special relation that the two countries shares. Full stop. The statement clearly indicated that India shares a deep bond of bonhomie and kinship. Full stop. However, this view gave the impression that India regarded Nepal as an area of India's influence. नेक्स्ट लिखिए internal politics of Nepal. Policies of Nepal. उसमें लिखिए according to श्याम सरन SHYAM Saran, ठीक है. In Nepal, politics has traditionally been dominated by high caste elite, who consciously tried to project Nepal as a country with distinctive mountain culture and identity. Full stop. Identity. In the mindset of political elites, India is a threat rather than an opportunity. Moreover,
the leftist or the Marxist parties in Nepal ठीक है अब एक दीजिए चाइना फैक्टर चाइना फैक्टर फैक्टर देखिए in 1959 in 1959 China established its full sovereignty over Tibet, full sovereignty over Tibet, and it was the time when Sino-India conflict. It was the time when Sino-India conflict over the border issue developed into a boundary dispute full stop. Nepal felt her security threatened by this development and therefore decided to project independence of its foreign policy independence of its foreign policy from Indian foreign policy perceptions by undertaking moves designed at the development of relations with China ये सब इशू है ओके चाइना का थोड़ा रिसेंट भी हम लिखा देते हैं लिखिए रिसेंट ये सब तो था ही मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वो हमने बता दिया कि कहां से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ है लिखा दिया हमने अब थोड़ा रिसेंट डेवलपमेंट लिखिए चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ही रिसेंट डेवलपमेंट थोड़ा लिखाते हैं ठीक है recent development ठीक है एक मिनट लिखिए चाइनीज प्रीमियर शी
T-X-I-C, Jinping, Xinping, Jinping, visited Nepal and elevated the Sino-Nepal relationship to strategic Sino-Nepal relationship of comprehensive partnership to strategic partnership. ठीक है, strategic partnership. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नंबर 2 पॉइंट इसी में लिखिए. Recently, Himalayan quadrilateral meeting between China, Pakistan, Afghanistan, and Nepal highlight Chinese influence and attempt to contain India in South Asia. Next, China has offered to provide access to trans-Himalayan railways and opening up of the port facility so that Nepal reduces its dependency on India. Full stop. Moreover, Nepal has joined BRI initiative, Belt and Road Initiative. Even though India suggested against it. Next, देखिए, for the first time, Chinese army and Nepalese army held joint military exercise in 2017 and 18. Also the Chinese provide financial assistance to Nepalese army.
आर्मी। नेक्स्ट लिखिए, अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ ओली, OLI, ओली, ओली ओली, द रिलेशनशिप बिटवीन Nepal and China further improved. चलिए अब हेडिंग दीजिए, recent developments in Indo नेपाल रिलेशन। ठीक है, ये जो चाइना वाला है ना, वो भी रिसेंट में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या है थोड़ा वो भी हम अलग से लिखा देते हैं कि आपको कंप्रिहेंसिव नॉलेज हो, पूरा नॉलेज हो, बाइफर्केटेड वे में एकदम, कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब उसको यूज कर लो तुम। अब अगर यूज नहीं कर पाओगे इसको भी तो फिर तो क्वेश्चनेबल है। इतना चीज पड़ोस के अगर आपको दे दिया जा रहा है तब भी अगर यूज ना कर पाए आप, तब क्वेश्चनेबल है। ठीक है, कि हर चीज को बाइफरकेट करके मैं आपको दे रहा हूं, एकदम लेटेस्ट तक, अभी तक का। ठीक है, तो इसको आप यूज करना आपको आना चाहिए, मुझे मेरे समझ से। ठीक है, लिख लीजिए। The relationship between the two countries, has reached a lowest point since 2014, according to 14 नहीं 15 लिखो, 2015, according to many analysts, okay, full stop. In 2015, Nepal adopted the constitution adopted a constitution which is seen as an attempt to marginalize the Madheshi community, marginalize the Madheshis community from the assumption of power, from the share of power, लिख दो, assumption confuse कर जाओगे, from their share of power However, Madhesis happen to be in numerical majority. Also, full stop. Also, influence of China was seen in the making of the constitution.
Constitution. Full stop. This has created, full stop. This has created a political turmoil in Nepal and the entry point from India was blocked by the local Madheshis, by the local Madheshis, However, within the power circle of the Nepalese elite, it was seen as an attempt by India to indirectly influence the politics of Nepal. Full stop. पैरा चेंज कर ले. Since then there was power struggle between the ruling Nepalese Communist Party the Parliament of Nepal was resolved twice since December 2020. Moreover, full stop. Moreover, this instability, moreover, Oli's open and outright inclination towards China and interference of Chinese Communist Party in the resolution of the conflict between two groups of the Nepalese Congress Party. Also came to light. This has further, full stop लिखो, such moves have further disgruntled India. Full stop. Professor S.D. Munshi, Professor, पैरा चेंज कर लो, लिखो. Professor S.D. Munshi said
The relations have been damaged seriously. The relations have been damaged seriously over the past 2 years. Past 2 years मत लिखो, in the past years लिखो, टू को हटाओ, in the past years लिखो खाली, full stop. India resorted to intrusive approach, muscular diplomacy. India resorted to intrusive approach, muscular diplomacy, and economic coercion, and Nepal reacted under Oli's leadership, Oli's, O-L-I, Oli's leadership by whipping, W-H-I-P-P-I-N-G, by whipping up a robust anti-Indian nationalism and an aggressive display of the China card, to reduce its dependence on India. Full stop. पैरा चेंज कर लीजिए. Moreover, during COVID and ऐसा लिखो, during COVID, relationship further hardened. The borders were closed for almost 1.5 years, which resulted in severe economic repercussions in Nepal. Okay, चलिए, ये सब हो गया. अब एक लास्ट में एक और हेडिंग, क्या लिखोगे हेडिंग? हेडिंग दे दो, सजेशन एंड ओपिनियन. ओके, सजेशन एंड ओपिनियन भी थोड़ा लिख लेते हैं, क्या होना चाहिए. उसमें पहला लिखो, इंडिया शुड expedite the infrastructure project running in Nepal.
Next, take initiatives to to uh, to 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 develop deeper interdependence in trade and in economics. लिखिए, in economics. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, focus should be on connectivity between India and Nepal, and active engagement of Nepal in multilateral forums such as BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल. ओके, BBIN करके भी एक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल. बिम्स्टेक एंड सार्क. Next, देखिए, मिलिट्री, लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, enhancement in military engagement and modernization of Nepalese military in a speedy manner. Okay. Okay. Next लिखिए, enhancement of active collaboration in the field of in business, academia, science and technology, चलिए, अब कुछ ऐसे ओपिनियन लिख लीजिए. ठीक है, लिखिए, सी राजा मोहन, ऐसे ही कुछ लिख लीजिए, यूज आता है ये सब चीज. सी राजा मोहन, Beijing is trying to overcome its geographical disadvantage through mega projects like Tibet Railway, but Nepal's nearest port will always be in India.
and the Gangetic plain will remain, and the Gangetic plain will remain its largest market. नेक्स्ट लिखिए श्याम सरन। श्याम सरन ने क्या बोला, ये सब का कहीं कहीं यूज कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग में, इसीलिए लिखा रहा हूं। श्याम सरन, इंडिया शुड seek to become, India should seek to become the transit country, seek to become the transit country of choice for Nepal, by offering it open access, to its transportation network, and ports, full stop. This will create positive interdependence rather than negative leverage. फुल स्टॉप। अच्छा, ये बोला एक और लाइन लिख लो, श्याम सरन का ही वर्ड, एक और लाइन लिख लो। द टेंडेंसी इन इंडिया इज टू रिगार्ड, द टेंडेंसी इन इंडिया is to regard, the tendency in India is to regard Nepal's dependence on India, for a transit as leverage against it. Okay? नेक्स्ट लिखिए जयंत प्रसाद। नेक्स्ट लिखिए जयंत प्रसाद, ये एम्बेसडर था। उसमें लिखिए द ओपन बॉर्डर इज अ सेफ्टी वाल्व, द ओपन बॉर्डर इज अ सेफ्टी वाल्व फॉर नेपाल without compromising India's security, comma, the challenge is to turn it into a bridge, into bridge, not a barrier, लास्ट वन लिख लीजिए ब्रह्मचलम्य, BRAHMA, ब्रह्म, CHELLANY,
ब्रह्मचालन्य, CHELLANY। नेपाल, नेपाल, nevertheless, Nepal, nevertheless, nevertheless, still needs India simply because of geography. Still needs India simply because of geography. Geography. Full stop. China can replace India. China can replace India as Nepal's main provider of essential supplies. China can replace India as Nepal's main provider of essential supplies only by moving the Himalayas, southwest. Himalayas southwest. ठीक है, यूज कर लेना जहां पे भी मन हो ये सब। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज एज फार एज नेपाल इज कंसर्न। तो पाकिस्तान खत्म, नेपाल खत्म, साफ्ता वाफ्ता जो भी था वो खत्म, आसियान पहले ही खत्म किया था। देखेंगे आसियान और कुछ जोड़ना होगा तो फ्यू मोर थिंग्स आई विल ऐड देयर। ओके, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में। एंड अब कौन है, हमें पढ़ना है एक बांग्लादेश, हमें पढ़ना है, हाँ, तुम्हारा श्रीलंका, दो है, ठीक है, म्यांमार का भी है थोड़ा सा, हम लोग उसको भी देख लेंगे, बगल का कंट्री है तो वी हैव टू सी इट। ठीक है, अफगानिस्तान को भी थोड़ा देख लेंगे, छोटा है कुछ, जैसा रिलेशन खास है नहीं हमारा अफगानिस्तान के साथ, वो है। देन साउथ ईस्ट एशिया में लुक ईस्ट पॉलिसी जो है या एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है उसको देखेंगे। एंड फिर चाइना, ग्रेट पावर्स खत्म, फिर रीजन वाइज देख लेंगे कुछ कुछ स्पेशल रीजन्स। ओके, सिलेबस में उतना ही है, उतना कर लेंगे एंड दैट विल बी ओवर। आज के लिए यहीं रखते हैं, आधा घंटा पहले ही छोड़ रहा हूं, ठीक है, लेकिन कल जो है आई विल कंपनसेट दिस। ओके, कल जो है हम इसको कंपनसेट करेंगे, जो आज आधा घंटा छोड़ रहे हैं, कल 2.5 घंटा या उससे अधिक का क्लास होगा। और हां, कल भी क्लास होगा, सुबह से ही क्लास होगा 9 बजे। ऑल राइट एवरीवन, ओके, 9 से कितना 11:30 तक हम लोग करने का कोशिश करेंगे। कमेंट आया क्या इधर देखें। सर, जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है उसके अलावा क्या हमें जीएस के लिए खुद से करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा? तो क्लास में जो हो रहा है वो क्लास वाले से हो जाएगा मैक्सिमम चीज, लेकिन देखो साल भर का वो कवरेज जरूरी है। ठीक है, साल भर का कवरेज अगर नहीं देगा तो फिर हम मामला फंसेगा। अभी तो मान लो कि हम लोग 1-2 चीज पिक कर रहे हैं और डाल रहे हैं, है कि नहीं, वो पढ़ा रहे हैं। आज जैसे इकोनॉमिक्स है, फॉर एग्जांपल टुडे वी हैव इकोनॉमिक्स सेशन, तो जो लोग भी हो लाइव चलेगा 8:30 बजे से, ठीक है, तो आप लोग रहिएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कराया जा रहा है। 1 साल का जब हम पूरा देखेंगे ना तो लगभग सब टॉपिक कवर हो जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है। जिस तरीके से जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से भी लाना पड़ेगा मे बी, तो उसके लिए कुछ देखेंगे बाद में क्या करते हैं। क्योंकि देखो पीटी के लिए पीटी सेंट्रिक पढ़ना जरूरी होता है। अभी पीटी मेंस दोनों क्लब करके चल रहे हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स है ये, दिस इज डेली करंट अफेयर्स। कभी डेली करंट अफेयर्स में हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं स्लोली ग्रेजुअली, धीरे धीरे चीजों पे क्लैरिटी लाते हैं जो भी हो रहा है हमारे अराउंड।
ठीक है, तो हमें हर चीज पे क्लैरिटी रहता है, लेकिन जब प्रीलिम्स आया तो प्रीलिम सेंट्रिक करंट पढ़ना पड़ता है। तो डेफिनेटली जो बिल्ड किया है आपने वो तो काम देगा ही, उसके अलावा भी थोड़ा बहुत हियर एंड देयर एडजस्टमेंट इज नीडेड। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो नीड करना ही पड़ता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अनुसार फिट करना है ना। अभी दोनों चीज को लेके चल रहे हैं, ओके। लेकिन ये करो, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके बताया जा रहा है आपको। बहुत ज्यादा पढ़ना, 6-7 घंटे टीचर पढ़ के अगर आपको 1 घंटा पढ़ाए, आप इतना सुन लो कि बहुत कुछ निकल के आ रहा है, ओके। चलिए फिर यहां तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग शाम में 8:30 पे, ठीक है, विथ करंट अफेयर्स क्लास। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।